So let's start, guys. Welcome back once again to the another session of Lighting Dream with respect to 4 months to Clat 2022. So application form has started. I guess most of you have even filled. If you haven't filled yet, make sure that it is done as soon as possible. So in this session, in the next 40 to 45 minutes, we are going to discuss that what all we have to do for the next 4 months. Uh, it's not 4 months even now. That we are going to discuss the takeaway and goals before entering the last quarter. So let's move to the first slide. This 4 months is very crucial for your next future of your life, because what you are doing in this 4 months will decide what you will be doing in the CLAT examination. So CLAT is not a one day thing. Most of you have has been preparing from the last 1 year. Some of you are the dropper for the second time. तो एक दिन की बात तो है नहीं. You can see the meme on the screen that how to crack CLAT in one day. तो एक दिन की बात ये है नहीं. Some of you are dropper for the second time. कुछ लोग पिछले साल से preparation start किए होंगे. कुछ लोग initially from January. Some of you must have started the preparation. So there are some things that has to be done regularly from today. It is presumed by us that ये अभी तक आप लोग कर ही रहे होंगे, पर just to give a thing that ये definitely for the next 4 month, that is जब तक CLAT नहीं होता तब तक आपको ये चीज करना पड़ेगा. So let's start. I will be taking that out at the last. First is the reading of the newspaper, articles and magazine. That is the most important thing. ये नहीं सोचना है कि अब जनवरी आ गया है या फरवरी आ गया है या मार्च आ गया है, न्यूज़पेपर रीडिंग बंद कर देता हूँ या फिर आर्टिकल रीडिंग नहीं करने की जरूरत है या फिर मैगजीन पढ़ने की जरूरत नहीं है. टिल द डे ऑफ क्लैट, व्हेनेवर इज योर क्लैट एग्जामिनेशन इन द मंथ ऑफ मे, उसके 2 दिन पहले तक न्यूज़पेपर रीडिंग, आर्टिकल एंड मैगजीन कंटिन्यू रखना है. Don't dare to leave the paper any time before the CLAT, or make it a point that you have to read both the newspaper, that is your Hindu and Indian Express. You cannot take only the Hindu or you cannot take only the Indian Express. Indian Express पूरी नहीं पढ़नी है. You have to go with only the editorial and the explain part. Apart from this, the article that we share daily in the group and the magazine of the different coaching and the compendium of the monthly thing. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. अभी भी बहुत टाइम है आपके पास. रिमेंबर दिस गाइस, 4 महीना में लोग क्लैट निकाल लेते हैं, 4 महीना में लोग क्लैट से डेविएट भी हो सकते हैं. So this is the most crucial time of your preparation. So make a habit of reading at least 3 hours if you are a dropper, or you means if you are not in board. Class 12 अगर आपका नहीं चल रहा है, most probably now I guess the board will be online only, seeing the pandemic condition. पर क्लैट ऑनलाइन नहीं होने वाला, क्लैट ऑफलाइन ही होगा और क्लैट में ही होगा. दैट वी विल बी डिस्कसिंग आफ्टरवर्ड. पहला इंपॉर्टेंट चीज है कि मेक इट अ पॉइंट दैट यू आर रीडिंग एवरी डे फॉर 3 hours. रोज 3 घंटा की रीडिंग बहुत जरूरी है. इफ यू वांट टू सिट फॉर 2 hours एंड गिव अ गुड क्लैट ऑन मॉक, इसके लिए 3 घंटा की रीडिंग बहुत जरूरी है. मूविंग टू द सेकेंड पॉइंट, दैट इज द करंट अफेयर नोट्स एंड रिविजन. इट्स टाइम टू स्टार्ट द रिविजन ऑफ द करंट अफेयर नोट्स जो आप पिछले 6 महीना से बना रहे हैं. पहला चीज है, फर्स्ट पहले डिस्कस करते हैं कि करंट अफेयर कब से कब का करना है. तो करंट अफेयर सितंबर से लेके अप्रैल तक का करना है. डोंट थिंक कि लास्ट 4 मंथ या 5 मंथ का करंट अफेयर करके चल जाऊंगा या चल जाऊंगी, आई विल बी गेटिंग अ गुड NLU. डोंट प्रेज्यूम दिस थिंग, बिकॉज every time I'm telling, every time in every session, that CLAT is a very unpredictable examination, guys. So don't take it for granted. Start revising the current affair notes जो आप लोग अभी तक बना चुके हो. We presume that current affair notes definitely you are making, और आपको बनाना भी है next 4 month में. तो make a habit of revising the current affair notes that you have already made. हर 10 दिन 15 दिन के अंदर current affair revise करना है from the month of September. तो कीप इट इन योर माइंड. जो करंट अफेयर है क्लैट 2022 में, वो है सितंबर से अप्रैल तक का. या अराउंड 20 अप्रैल यू हैव टू डू फॉर द करंट अफेयर. सो दैट इज इम्पोर्टेंट. अगर अभी तक भी आप नोट्स नहीं बना रहे थे तो स्टिल यू हैव 4 month. पहले के नोट्स आप कंपेंडियम से कवर कर सकते हो. फॉर दैट यू हैव टू गो फॉर द मंथ एंड क्लैट पोस्ट, और आज से भी आप क्लैट नोट्स बनाना स्टार्ट कर सकते हो अगर अभी तक नहीं कर रहे थे. बट मेक श्योर दैट रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ. अगर अब आप रिवीजन स्टार्ट नहीं करोगे अपने पुराने करंट अफेयर का, देन इट विल बिकम अ बैकलॉग.
Third important thing that has to be done regularly from now for the next 4 months is your sectional test. This is very important, guys. Uh, Reading and sectional test mock. These are the only three that you have to do for a CLAT examination. So make your strategy accordingly. We will be discussing what section you can do in one day, what section you should do in another day. After this slide, we will be discussing that. Sectional test is very important. Make a point that you are solving at least 6 sectional tests of 2 sections. So, for example, 3 from the legal and 3 from the math, or 3 from the logical, 3 from the current affair, whatever it is. If it is more than it is बहुत ज़्यादा अगर कर रहे हो तो that is बहुत बढ़िया. Don't think कि मेरा मटेरियल कम खत्म हो जाएगा फरवरी या मार्च तक, मैं फिर क्या करूँगा. That is not the point, guys. We will be providing you n number of material. You are having your coaching material. तो ये सोचना नहीं है कि मेरा मटेरियल कंप्लीट हो जाएगा तो मैं अभी धीरे धीरे बनाता हूँ. द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर you are getting for your D-Day. तो sectional test, make it a point that you are giving at least 6 to 7 sectional test of 2 section on a daily basis. उससे ज़्यादा दे रहे हो, अगर 10-12 दे रहे हो तो, अगर 10-12 दे रहे हो तो that is very good. Now moving to the weak areas. So this is the point. This is one of the very important point that is mentioned in the slide. That is your weak area. Ki now it's time to work on the weak area. Whatever basics and whatever you are doing till the month of January, ठीक है, हो गया, it is done. Assumption क्या होता है, conclusion क्या होता है, बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा किया. Now it is important to work on the weak area. कि फॉर एग्जाम्पल लॉजिकल में आपका इकोनॉमिक पैसेज वीक है, या फिर सोशियोलॉजी का पैसेज वीक है, या फिर फॉर एग्जाम्पल फिजियोलॉजी का पैसेज वीक है. तो रीड अ लॉट ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल ऑन दैट. मेक श्योर दैट यू आर रीडिंग गुड नंबर ऑफ आर्टिकल ऑन दैट, प्रैक्टिसिंग दोज टाइप ऑफ क्वेश्चन विच आर योर वीक एरियाज. सो अगर किसी का इंग्लिश वीक एरिया, इंग्लिश में जो वीक एरिया है उस पर वर्क करना है, जिसका लीगल में जो वीक एरिया है, अगर स्टैटिक लीगल वीक एरिया है तो उस पर वर्क करना है अपन को. अगर लॉजिकल में मेरा वीक एरिया है फॉर एग्जांपल एनालिटिकल रीजनिंग, तो मेरे को एनालिटिकल रीजनिंग पे वर्क करना है. या फिर लॉजिकल में मेरे से इकोनॉमिक पैसेज सॉल्व नहीं होता है तो मैं इकोनॉमिक आर्टिकल पढ़ूंगा, मैं इकोनॉमिक रिलेटेड पैसेज बनाऊंगा, एलसेट के, जीमैट के, कंपेंडियन सेट ड्राइव में वो बनाऊंगा. So if you not start your working on your weak area now, mock में स्कोर नहीं बढ़ेगा. मॉक में कैसे स्कोर बढ़ाना है that we will be discussing. पर फोर्थ नंबर पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज. अब अगर अपने वीक एरियाज पे काम नहीं करोगे तो डोंट थिंक दैट आपका मॉक का स्कोर बढ़ने वाला है. द लास्ट पॉइंट दैट इज थिंग्स टू बी डन इज रेगुलरली इज योर क्वांट एंड लॉजिकल. So from the last 2 years that we are guiding student and from my personal experience also in CLAT examination, from my personal experience also in CLAT examination, what I have seen is that the people candidate face difficulty. उनका CLAT इसलिए नहीं निकलता है because of the logical and the quant section. After giving the mock, after giving the quant section, you tell that मेरा logical खराब था इसलिए CLAT नहीं हुआ, मेरा quant में कम नंबर आया इसलिए CLAT नहीं हुआ. Still you have 4 months guys. Quant और logical को अपना improve करिए. Make it a point that you practice quant and logical definitely on the everyday basis. So this is the last point in the things to be done regularly, and the most important thing after the weak areas, that is your quant and logical, is to be done regularly, so that at the end of the April or after the CLAT, when you come out of the examination hall, you don't tell the mentors that मेरा logical के कारण CLAT नहीं निकलेगा, मेरा quant के कारण CLAT नहीं निकलेगा, because every year the same thing is happening. We are guiding the aspirants for the CLAT 2021. We have guided them. Now also we are guiding them. We have seen that सारे बच्चे का ही problem हो जाता है last में, quantitative and logical. So make sure your quant and logical is good for the next 4 months. You can improve it. नहीं हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, that we'll be discussing in the section wise strategy. Next slide, Kanish. So these are the things that you have to do regularly. CLAT is not a one day thing. Coming to the first part, don't think that कि एक दिन में मैं 5 सेक्शन कर लूंगा या फिर 4 सेक्शन कर लेता हूँ. This is not a good strategy. Distribute your section wise work on Monday, Tuesday, alternative day basis. The first is the English and the logical section. So there is a meme there, you can see that क्या बताऊँ भाई, logical section वाले में logical reasoning वाले section में थोड़ा नंबर कम आ गया वरना CLAT क्रैक हो जाता. This is the basic thing that we are listening from the last 2 years. इंग्लिश और लॉजिकल सेक्शन में स्टार्टिंग पॉइंट सबसे पहला है रीडिंग. अगर आपका अभी तक रीडिंग इज नॉट गुड, रीडिंग इज टाइम टेकिंग, तो मेक श्योर दैट इट इज डन मैक्सिमम बाय द एंड ऑफ जनवरी, बिकॉज इन द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल यू कैन नॉट थिंक टू इम्प्रूव योर रीडिंग गाइज. मेक इट अ पॉइंट
at that point of time definitely you will be telling that मेरा reading सही नहीं है, I am not able to complete the mock on time. Definitely the mentor will be guiding you that time also, but make sure that by the end of January, 30th January, your reading is very good. You are not taking too much time in reading. अभी भी अगर ये दिक्कत है तो instead of reading for 3 hour, read for 4 hour. If you are a dropper, अगर क्लास 12 में हो तो थोड़ा कम रीड करने से चलेगा. सो इंग्लिश एंड लॉजिकल सेक्शन में अगर गुड स्कोर आपको चाहिए तो पहला चीज है रीडिंग. मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द सेक्शनल टेस्ट एंड कंपेंडियम. Practice a lot of sectional test and compendium for this two section. Take the help of bankers adda. Then you have the LSAT, GMAT, and then the compendium and the different material that is available in the drive. अगर वो सारे compendiums हो गए हैं, messages, we will be giving you more material. That is not a big deal. So recently we have launched the Lighting Dream synopsis also. You must have seen it in the group. It is in the drive. So make sure that you complete it within the next 10 days, क्योंकि अगले 10 दिन बाद हम फिर दूसरा साइनोप्सिस लॉन्च कर देंगे. तो यू विल बी थिंकिंग कि अब मैं इंग्लिश का साइनोप्सिस बनाऊं कि या लीगल का साइनोप्सिस बनाऊं या लॉजिकल का बनाऊं, एंड आफ्टर अगेन 10 डेज बाद जो है फिर एक साइनोप्सिस लॉन्च हो जाएगा. तो इट विल बी अ कंटिन्यूड प्रोसेस. अब आपका ये काम है कि डोंट टेक इट, कीप इट फॉर द backlog, do it as soon as possible. So practice all the sectional test and compendium that is available in the drive with your reading to get a good score in the legal and the logical, English and logical section. So the third point talks about the GMAT, LSAT and bankers adda. Every time we are repeating this thing because the जो क्वेश्चन होते हैं bankers adda के, GMAT के, LSAT के, ये इंग्लिश और लॉजिकल सेक्शन के लिए बेस्ट होते हैं अपार्ट फ्रॉम ऑल द कंपेंडियम एंड मटेरियल दैट यू आर प्रैक्टिसिंग. तो गूगल में सर्च करना है, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, डेफिनेटली यू मस्ट बी नोइंग. गूगल में सर्च करना है बैंकर्स अड्डा के पीओ, आरबीआई क्लर्क, दिस ऑल क्वेश्चन यू शुड बी प्रैक्टिसिंग फॉर द इंग्लिश सेक्शन, दैट इज वेरी गुड. For the logical, you should be having a good control over the GMAT and the LSAT question, that is important. Now, moving to now after this, you have to start with the GMB. The GMB of Clat 2020 and 2021 are in the drive. Make a point that you complete the GMB as soon as possible, because definitely Legal Age is going to launch the GMB for Clat 2022 very soon, and they have started the booking also. So soon we will be sharing that also with you. So before we are sharing the GMB for 2022, make sure you are done with the GMB of 2020 and 2021. Both are available in the drive, guys. So get it done. It is the time now to start the GMB. अब easy question, medium question करने का time नहीं है. This time is very critical. The next 4 month, 3.5 month, better to say. तो GMB एंड कैटलिस्ट कंप्लीट करिए जितना जल्दी हो. मेक अ टारगेट, 100 टारगेट बनाइए कि मैं 15 दिन में इतना क्वेश्चन बनाता हूँ GMB लीगल का या लॉजिकल का या इंग्लिश का, वट एवर इट इज, बट कंप्लीट इट. Grammar and vocab, guys. Yesterday I was talking to an aspirant on the call, and he told me that I am getting very less score in the English section. When I asked to analyze him the mock, I found that because of the vocab and the grammar part, he is not getting a good score. तो डोंट थिंक दैट अब टाइम नहीं बचा है वोकैब और ग्रामर पे काम करने का. स्टिल यू हैव टाइम. वोकैब इंप्रूव करना है, अभी भी टाइम है, इंप्रूव कर सकते हो. थोड़ा ग्रामर भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बिकॉज अंटिल एंड अनलेस योर वोकैब इज नॉट गुड, डोंट थिंक और डोंट एज्यूम दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द पैसेज. Although it is suggested that if you are understanding 60% of the passage, you can solve the question very easily. But for that also your vocab should be very good. So make sure that you are done with the word power made easy. We have told you very beginning in your preparation that word power made easy is very important. And then for the logical section, I have mentioned the analytical reasoning. Don't presume that in Clat 2022 there will be no analytical reasoning question. Clat 2021 में नहीं था, that is not a big deal. Clat 2020 में था. It can be in Clat 2022. That depend on the question paper maker. Neither Lighting Dream nor Legal Age nor any coaching is going to make the paper. It is the consortium. So make a habit of practicing the analytical reasoning every week, guys. Every Sunday or Saturday. If on the Sunday you are giving the mock, I am presuming that you must be giving mock on every Sunday. Then you can go for Saturday. Practice every weekend the analytical reasoning, which include the clock, calendar, coding, decoding, blood relation, sitting arrangement, puzzles. Just a limited analytical reasoning, but practice them from the good book of the SSC or the RBI or the PO examination. So make sure that analytical reasoning is not left, क्योंकि कुछ छूट जाएगा लास्ट में तो फिर लगेगा कि अरे यार थोड़ा मैं एनालिटिकल रीजनिंग थोड़ा बढ़िया से प्रैक्टिस किया रहता तो मेरा ज्यादा 2 नंबर ज्यादा आता, देन आई वुड हैव बीन इन NLU हैदराबाद.
or in Jodhpur, whatever it is. So make sure your analytical reasoning is done. Moving to the next slide. This is all about your English and logical section. You don't have to do every section on every day. Keep this in mind. If you are doing this, you have to change that strategy. हर दिन हर section करना जरूरी नहीं है. Do 2 section or 3 section on a day. That is more than enough. Okay. So next we have the legal and the current affairs section, the most scoring section. नीचे से ऊपर चलते हैं. सबसे पहले है द मोस्ट स्कोरिंग सेक्शन. कीप इट इन योर माइंड, अपने दिमाग में ये चीज रखिए कि अगर आप लीगल और करंट अफेयर मिला के अराउंड 65 ला रहे हो, देन 65 60 to 65 अगर आप ला रहे हो, यू आर गेटिंग द टॉप 5 NLU. Today you just you can take it at note it at any point wherever you want. कि if you are getting around 60 to 65 in your legal and current affairs section, you are getting the top 5 NLU. No one can कोई रोक नहीं सकता है आपको getting the top 5 NLU. So पहला important चीज याद रखना है दिमाग में कि legal and current affairs is the most scoring section. और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि जब when the CLAT result will come guys, no one is going to see कि लॉजिकल में कितना आया, लीगल में कितना आया, करंट अफेयर में कितना आया. इट इज योर ओवरऑल स्कोर. सो even if you're getting less score in logical and getting good score in legal, don't get your legal bad by improving the logical. मतलब आप logical improve करके आप अपने legal खराब कर लो. Don't make that sense. Then moving to the legal practice, static and current. So the static we have already uploaded the video of the tort and contract. If you have not yet watched it, make sure you watch it and start practicing the static question, because CLAT 2020 में जो लीगल के क्वेश्चन थे वो पूरे करंट पे बेस्ड थे. इंपॉर्टेंट जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट के आए थे एंड व्हाटएवर इंपॉर्टेंट लीगल डेवलपमेंट हुए थे. पर 2021 में क्या किया इन लोगों ने? इट वाज फुल्ली अ स्टैटिक पैसेज इंक्लूडिंग द हिंदू मैरिज एक्ट एंड ऑल द अनप्रेडिक्टेबल थिंग वाज इन द लीगल सेक्शन ऑफ CLAT 2021. दोज हु हैव गिवन CLAT 2021, यू मस्ट हैव द आइडिया ऑफ दैट. तो जब हम लोगों को पता है कि CLAT स्टैटिक भी पूछ सकता है और करंट भी पूछ सकता है, वी हैव टू वर्क फॉर बोथ. नाउ लीगल, आई एम टेलिंग यू गाइस, लीगल में देयर इज नथिंग एज सच एज कॉन्सेप्ट. जैसे कि लॉजिकल में हम लोगों ने डिस्कस किया लास्ट स्लाइड में कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, पर फॉर योर लीगल सेक्शन देयर इज नथिंग एज सच एज कॉन्सेप्ट. यू हैव टू प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस मोर एंड मोर टाइप्स ऑफ पैसेजेस एंड मोर क्वेश्चंस. सो कहां से प्रैक्टिस करना है? ऑल द मटेरियल ऑफ द ड्राइव, you have the GMB, you have the Catalyst, Lighting Dream synopsis will be launched very soon. You have the YouTube, lot of available marathon and question of legal is on the YouTube available. Search them guys, give a little bit time on doing the research part. NLU में जाके तो research ही करना है आप लोगों को, तो start from now only, do a little bit research. If you're not getting on the YouTube, let us know, we will be providing you. So practice good number of questions for the legal. Legal में एक चीज important होता है, you have to stick to the passage. Whatever is given in the passage, you have to stick to that. So you cannot use your prior knowledge. Even if you are Albert Einstein, don't use your prior knowledge. Write it anywhere on the wall of your room that I don't have to be Albert Einstein in legal section. The moment you will be using your prior knowledge, your legal section will be gone. So it is a very scoring section guys. Practice, practice and practice. This is only for the legal thing, nothing more. Current, refer to live law, bar and bench, legal development, whatever is happening. For example, the latest is the increase in the marriage age of women. Then you have the drone rule, medical termination of pregnancy act. Then you have the ART, that is the surrogatory rule has been come. And lot of amendment has been done in the various rule. Make sure you are done with that. Revision of the current affair, we have discussed in the beginning of the session that it's time to start with your revision of the current affair. Notes and compendium, your notes is the, you can tell, the brahmastra of your CLAT preparation for current affair. So every time I see in the group and everywhere that the people are asking that current affair kya kare, guys, notes banana hai. Now how to make the notes? While you're reading the newspaper, take it the important topic, और जो भी वहाँ पे important points दिया हुआ है उसको वहाँ से take out करके directly move to the Drishti IS and then to the YouTube. Make your notes from there. I'm repeating it once again because every day I see in the group that people are asking that notes कैसे बनाना है. So you have to take the topic from the newspaper, that is Hindu and Indian Express. Then you have to move to Drishti IS. And then you have to move to the YouTube, and then we have the, now Lighting Dream is also providing daily current affair.
वहां से नोट्स बनाना है। आफ्टर विच एट द एंड ऑफ द मंथ यू आर हैविंग द मंथन एंड द क्लैट पोस्ट। तो अगर कोई पॉइंट बचा रह जाता है देन यू कैन ऐड इट फ्रॉम देयर। अब अब have ki practice from where to practice the current affair. So the mock that you are giving every month, you are getting lot of practice question from there. Then you have the different material, different quiz that we organize. In the last session people told us that we want the quiz, we want quiz on current affair. We started quiz, but not everyone is participating in the quiz. So make a point that whenever any quiz come in the group, that not at that point you can give the quiz within 2 days. It is open for 2 days. So current affair is very important, guys. As you can see the meme that is present on the slide, that in the Clat 2020 what they has asked and in Clat 2021 what they has asked. That is the Sheikh Mujabir Rahman died on which day, then World Water Day. So you can see you can understand the meme. I know you are very good in understanding meme. तो मेक इट अ पॉइंट। अब एक चीज है कि करंट अफेयर में भैया मार्क्स नहीं आ रहा है, वी आर मेकिंग नोट्स, रिवाइजिंग करंट अफेयर, रेफरिंग टू मंथन, फिर भी मार्क्स नहीं आ रहा है। गाइस सी, करंट अफेयर इज एन ओशन, ऑलवेज रिमेंबर। इफ यू आर थिंकिंग कि अभी जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं उससे करंट अफेयर में 35 में मेरे को लीगल के जैसा 30-32 आ जाएगा, दैट इज नॉट अ पॉइंट गाइस। On the D day it might be possible that you are getting 30, 28, 32 out of 35 in current affair. But as of now in the month of January, February and even March, if you are thinking कि मेरे को 35 में 32 आ जाएगा current affair में, that is not expectable. Neither we suggest कि ऐसा होना भी चाहिए, because it is not possible also. Now you are thinking इतना current affair पे time देने के बाद भी current affair पे marks नहीं आता है. Guys, see I am not telling. अगर आप करंट अफेयर का मॉक देते हो, मतलब मॉक में जब करंट अफेयर सेक्शन सॉल्व करते हो, तो इफ यू आर नॉट नोइंग दैट टॉपिक, आपको वो टॉपिक आपके नोट्स में ऐड हो जाता है व्हेन यू आर एनालाइजिंग द मॉक। या फिर लाइटिंग टीम कोई क्विज कराता है, आप उसमें 0 भी लाते हो फॉर एग्जाम्पल, या फिर 1 लाते हो, 2 लाते हो, लेकिन आपको फिर वो चीज आपके करंट अफेयर नोट्स में ऐड हो जाता है। अब व्हेन फाइनली यू विल बी सिटिंग फॉर योर क्लैट एग्जामिनेशन, आपके पास कोई टॉपिक बचेगा नहीं, एवरीथिंग विल बी वॉट एवर यू हैव डन इन द लास्ट 4 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ, 8 मंथ। तो यू हैव टू ऑलवेज थिंक फ्रॉम द डी डे परस्पेक्टिव कि डी डे के दिन तक आते आते मेरा पूरा करंट अफेयर रेडी होना चाहिए। दैट इज इंपॉर्टेंट। डोंट थिंक कि अभी मैं इतना टाइम दे रहा हूँ करंट अफेयर पे, मेरा मार्क्स नहीं आ रहा है। ये चीज को दिमाग से निकालिए, लास्ट दिन तक आपको काम करना पड़ेगा करंट अफेयर पे। इट्स जस्ट लाइक योर रीडिंग। तो दैट इज इंपॉर्टेंट। सो दिस इज द लीगल एंड द करंट अफेयर सेक्शन, द मोस्ट स्कोरिंग सेक्शन गाइज। इसको भी दीवार पे लिख के चिपका लेना कि इसमें अगर 60 से 65 यू आर गेटिंग अ टॉप 5 एनएलयू। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। The favorite section of every CLAT aspirant, that is the quantitative aptitude. Let's make it some interactive the session. Just type in the chat box what score you are getting in your quantitative aptitude section. सीरियसली डोंट फील अशेम दैट यहाँ पे बाकी को 15 आ रहा होगा, किसी को 13 आ रहा होगा, तो मेरे को कम आ रहा होगा, ऐसा डोंट थिंक। गुड। There are 20 people in the group. I am expecting responses from everyone. Yeah, little bit fast guys, we have to complete the session also. See, so some are getting 12, 13, I never attempted. Some are getting 1, 2, some are getting 5, 6, 7, 8, 9, 10, whatever it is. So 13, 14 taking a lot of time, 12, 14, 3, 7. Coming to the meme, you opted for law because you are good at arguments. I opted for law because I hate math. We are not the same bro. Guys, don't think कि if you're not doing the current affair आपका क्लैट निकल जाएगा। पहला चीज, इस चीज को दिमाग से बाहर कर दीजिएगा। You can be getting HP, NLU, Simla, whatever it is, but now I am not attending. Okay, so सबसे पहले अपने दिमाग से इस चीज को बाहर कीजिए कि without the quantitative aptitude section you are going to clear CLAT. It is very important to get at least 7 to 8 in your quantitative aptitude section to get a good NLU, that is the top 5, top 7 NLU. तो क्या करना है quantitative aptitude में? सबसे पहले अभी तक I am presuming कि your basics has been done, that is your profit and loss, ratio, proportion, simple interest, compound interest, ये सारा चीज अभी तक हो गया है। स्टिल अगर आपने नहीं किया है, स्टार्ट नहीं किया है, या फिर कर दिए हैं नहीं फिर भी हो रहा है, practice it from the RS Agarwal guys. Practice it from the banking examination question, the basics of all the ratio, proportion, simple interest, compound interest.
नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि अब डीआई के क्वेश्चंस आते हैं एंड ही इज टेलिंग दैट बेसिक्स करना है, मतलब प्रोपोर्शन एंड व्हाटएवर ऑल दैट। डीआई के जो क्वेश्चन होते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, वो पूरा पूरी आपके रेशियो एंड प्रोपोर्शन, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, ये सब पे बेस्ड होते हैं। So the people who are getting still below 5 and the people who are getting 13, 14, that is very good. Make sure that your remaining section are good. You are going to get a good NLU. The people who are still getting below 5, कहीं ना कहीं आपका बेसिक्स इंप्रूव करने का टाइम है, अभी भी आपके पास है. Still you have 15 days guys for your basics of any section. By the end of January, अगर अभी भी आपका बेसिक्स अच्छा नहीं हुआ है, you have the end of January, you can do it still. So below 5 people, you are requested to work on your basics from the RS Agarwal, then move to the DI set. Passage based question is very important, guys. Don't think that Clat will only be asking the pie chart, bar graph, or that all. They can be asking that only the passage based question. So make sure you are practicing that. कहाँ से practice करना है? First and the foremost is your drive in the WhatsApp group. Then a lot and lot of DI question and caselet based question are available on the YouTube, guys. As I've told you, NLU में research करना है, अभी से research करने का आदत बनाइए. One day aspirant personally messaged me to provide him some DI question, and while I was searching on the YouTube, I saw that there are n number of DI and caselet based question which can be used for your Clat examination. So they are for the RBI, they are for the PO, they are for the bank, but the same comes in your Clat examination also. Now so practice from there. Still you have 4 months. अभी भी क्वांटिटेटिव में आराम से 8-9 लाया जा सकता है, एंड द डे यू विल बी गेटिंग 8 to 9, ऑटोमेटिकली गाइज यू विल बी हैविंग द कॉन्फिडेंस कि हाँ भैया मेरे से क्लैट प्रिपरेशन क्लैट क्लियर हो सकता है. तो क्वांटिटेटिव इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन. इट प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल, गाइज. डायरेक्टली फ्रॉम जोधपुर यू विल बी इन बेंगलुरु. नाउ यू कैन अंडरस्टैंड बेटर, आई गेस. So you can directly move from Jodhpur to Bangalore if your quantitative aptitude is good. This is all about the 5 section that we have discussed. Moving to the next slide. Mock and analysis. So first coming to the meme. Earth if Clat aspirants stop printing mock. Guys, Clat offline होगा पहला चीज. Don't presume कि Clat will be online. Clat ये होगा वो होगा. As of now, Clat will be offline. So instead of giving the mock, अगर आपका पोर्टल पे मॉक आता है, that is another thing. But if your mock is downloadable, get it printed. पापा का थोड़ा पैसा खर्चा होगा, but don't take all that at this point of time. Don't think about all that कि एक मॉक 40 पेज का होता है, 50 पेज का होता है, 50 पेज का मॉक प्रिंट कराएंगे और वीक में 3 मॉक देना है. अभी जो मैं स्ट्रेटेजी बताने जा रहा हूँ, वीक में ऑल्टरनेटिव डे आप लोगों को मॉक देना है. तो गेट योर सेल्फ टाइड अप फॉर द प्रिपरेशन. ये सब सोचना नहीं है, एक बार क्लैट निकल जाएगा, एवरी दैट 50 पेजेस प्रिंटिंग एंड एवरी दैट थिंग विल बी रिटर्न बैक. तो leaving apart the meme, guys, moving to the strategy. First is the frequency of mock. Clat 2022 aspirants, every alternate day mock is now important. Make it a point. January, February, March and April, you have to give a mock on every alternate day basis, and the next day you have to do the analysis of that mock. So don't think that you are giving 4 mock a week and उसमें से 2 का analysis कर लिया है, 2 छोड़ दिया है, score improve नहीं होगा. You will be giving n number of mock. It might be that before the Clat you have given 100 mock. वो सिर्फ आपका रिकॉर्ड बुक में रहेगा. नेक्स्ट टाइम आप शायद NLU आसाम या रांची में पढ़ रहे होगे और किसी बच्चे को बोलोगे अरे यार मैंने तो 150 मॉक दिया था, तो वो भी सोचेगा कि भैया 150 मॉक देकर आप NLU आसाम में क्यों पढ़ रहे थे. देन यू विल बी टेलिंग क्योंकि मैंने एनालाइज नहीं किया था मॉक को. सो इफ यू आर गिविंग अ मॉक ऑन मंडे, ट्यूसडे इज द एनालिसिस, वेडनेसडे इज द मॉक, थर्सडे इज द एनालिसिस, फ्राइडे इज द मॉक, सैटरडे इज द एनालिसिस, Sunday is the mock and Sunday is the analysis. Don't keep it for Monday. So frequency of mock is at least 3 mock a week. Go for alternative day mock. इस पे अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, you can ask once I will be stop sharing the slide. Score in mock. This is very important. Frequency से ज़्यादा important है analysis. Analysis से भी ज़्यादा important है score, guys. Without knowing from your side in the chat box, I am telling you that there must be people in this meeting जो कि मॉक दे ही नहीं रहे होंगे डर से कि भैया मेरे तो 30 आ रहे हैं, 40 आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं, 60 आ रहे हैं.
किसी कोचिंग के टॉपर का किसी के कोचिंग के टॉपर का 100 है, किसी कोचिंग के टॉपर का 120 है भैया, किसी कोचिंग के टॉपर का 130 भी है, पर मेरे तो सिर्फ 40 50 60 70 है। तो पीपल, अभी बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो पीपल मॉक देना छोड़ दिए होंगे। हाँ, आई नो दैट। ठीक है, तो स्कोर इन द मॉक वाले पॉइंट पे आते हैं गाइस, स्लाइड में जो दिया हुआ है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस पे। पहला पॉइंट है, दोज आर माय ओल्ड एस्पिरेंट प्रियमवदा, किंजला एंड अंकित, ऑल आर देयर, मोहम्मद फरीद। I am repeating it from the last 1 year कि the people who are getting 120 and 130 in CLAT mock in the coaching is in none of the NLU. If you want, I can repeat it once again. Okay, the people who are getting 120 and 130 is in not in any of the NLU. पहला चीज, the people who were getting a constant score, who were giving the mock consistently, that is the frequency of the mock we discuss. जो लोग वीक में 3 मॉक दे रहे हैं, उसके अगले दिन उसका एनालिसिस कर रहे हैं with a constant score, constant mock, they are in the NLUs guys. तो don't feel that मेरा mock का score कम है, I am getting 60, the topper is getting 120, मेरा तो CLAT होगा नहीं, तो mock मैं देना छोड़ देता हूँ या छोड़ देती हूँ, whatever it is. Don't stop giving mock. Mock नहीं तो CLAT नहीं, because mock is the same thing as your CLAT. डी डे में क्या होगा कि कहीं और से क्वेश्चन रहेगा, और तो कुछ नहीं होने वाला है ना गाइस, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस उस समय कम रहेगा, दैट आई अंडरस्टैंड। पर जैसा कि आप मॉक दे रहे हो वैसा ही क्लैट भी होगा डी डे पे, तो मेक श्योर दैट स्कोर इज शुड नॉट बी अ बैरियर इन प्रिपरेशन। अगर आप नेगेटिव हो गए हो अपने स्कोर को लेके, वी कैन डिस्कस दैट पर्सनली, वी कैन डिस्कस दैट इन द ग्रुप, वी कैन डिस्कस दैट आफ्टर दिस मीटिंग ऑल्सो, पर स्कोर को लेके मॉक देना छोड़ना नहीं है। अब थोड़ा सा आ जाते हैं मॉक कैसे देना है। तो पूरा जो आप मॉक दोगे, हाउ यू आर गिविंग द मॉक डिपेंड ऑन द लास्ट 4 स्लाइड जो हम लोग किए हैं, दैट इज योर रीडिंग, दैट इज योर सेक्शनल टेस्ट, दैट इज योर बेसिक्स, दैट इज योर टाइम मैनेजमेंट गाइस। तो रीडिंग आप लोगों को मैंने बता दिया, सारे सेक्शंस का मैंने बता दिया, बेसिक्स मैंने बता दिया, टाइम मैनेजमेंट। पूरा पेपर किसी से कंप्लीट नहीं हो सकता है, करने वाले करते हैं, पर everything has a caveat, you must be knowing what is caveat, that is a legal maxim meaning warning। तो पूरा पेपर किसी से कंप्लीट नहीं हो सकता है, पर करने वाले करते हैं, पहला चीज ये। दूसरा चीज, आपका अटेम्प्ट है फॉर एग्जांपल 120, जिसमें से आप सही कर रहे हैं 50 और 70 गलत कर दे रहे हैं सर, तो आप फिर तो बहुत सही रास्ता पे जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। The number of attempts should be such that your negative is very less। अब नेगेटिव को कम कैसे करना है, पहले इस पे डिस्कस करेंगे। नेगेटिव गाइस कब होता है, जब हम, उसमें 2 चीज होती है, जब हम जानते हुए भी अपना गलत आंसर मार्क करके आते हैं, एक तो बिकॉज ऑफ द कि मैं मॉक दे रहा हूँ, अरे यार मैं मॉक दे रहा हूँ, आज मुझे 2 बजे से मॉक देना है, एक चीज ये होती है। तो पहला चीज इस चीज को निकालिए कि नेगेटिव मतलब कि मैं मॉक दे रहा हूँ, इस चीज को निकालिए अपने अंदर से कि आई एम गोइंग टू गिव अ मॉक। मॉक शुड बी अ डेली सेक्शनल टेस्ट, अंडरस्टैंड दिस पॉइंट गाइस, पहला चीज। दूसरा ये होता है कि मैं पैसेज रीड कर रहा हूं, बट कुछ पॉइंट स्लिप हो जाते हैं, जिस कारण से 5 में से 4 सही होने चाहिए थे, मेरे सिर्फ 2 ही सही हुए। 2 इसलिए गलत हुए क्योंकि मैंने क्या किया कि मैंने कुछ पॉइंट मेरे स्लिप कर गए, इस कारण से मेरा नेगेटिव ज्यादा हो गया। तो पॉइंट स्लिप भी अगर कर रहा है, वो भी आपके ऊपर ही डिपेंड करता है, ठीक है, वो भी आप ही के ऊपर डिपेंड करता है कि बिकॉज सम टाइम आपका रीडिंग जो है, आप सही से रीडिंग नहीं कर रहे हो, कॉन्सेंट्रेशन से रीडिंग नहीं कर रहे हो। इसलिए इन द बिगिनिंग ऑफ द सेशन, इन द फर्स्ट स्लाइड आई टोल्ड यू गाइस, मेक अ हैबिट ऑफ रीडिंग एटलीस्ट 3 आवर अ डे। जब तक आप 3 घंटा की रीडिंग रोज नहीं कीजिएगा, आप 2 घंटा बैठ के मॉक नहीं दे सकते हो विद फुल कॉन्सेंट्रेशन एंड इन्फ्लुएंस पावर। जैसे जैसे 1.5 घंटा होने लगता है, जैसे जैसे टाइम बीतने लगता है गाइस, हमारा कॉन्सेंट्रेशन, हमारा इन्फ्लुएंस पावर भी गिरने लगता है। इस चीज को मेंटेन करने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डू अ डेली रीडिंग ऑफ 3 घंटा। ओके, तो इफ यू आर नॉट अ क्लास 12 और बोर्ड एस्पिरेंट, and you can keep the board aside as of now, give more time to your CLAT preparation। तो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब है OMR कब फिल करना है, OMR फिल करना है एज सुन एज योर सेक्शन इज कंप्लीटेड, एंड डोंट इन द व्हाइल गिविंग द मॉक, इफ यू अभी तो ऑनलाइन ही कोचिंग चल रही है मैक्सिमम, इफ इट इज एन ऑफलाइन
mock you are giving. Don't see here and there that अरे उसने इतना सारा OMR मार्क किया है, मैंने तो इतना कम मार्क किया है, उसका पेपर ज्यादा कंप्लीट हो रहा है. Don't think. Make sure your negative is very less. Negative marking कम कैसे करना है? Starting with the first slide, your reading, moving to the second, third and fourth slide that we discussed, your practice. डोंट थिंक दैट भगवान आके आपका नेगेटिव मार्किंग कम कर देंगे, या फिर आर्यन भैया या फिर कनिष्क भैया या समवन फ्रॉम लाइटिंग ड्रीम विल कम और आपका नेगेटिव मार्किंग कम कर देंगे. डोंट थिंक दैट. योर प्रैक्टिस मेक्स योर नेगेटिव मार्किंग, एंड वॉट एवर यू आर प्रैक्टिसिंग वो आपके नेगेटिव पे डिपेंड करेगा. सो फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉक इज 3 मॉक्स एटलीस्ट वीक. स्कोर इन द मॉक का स्कोर देखना ही नहीं है, जो भी आ रहा है उसको एनालाइज करो, वीक एरिया को निकालो, उस पर काम करो. प्रेफर्ड मॉक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. I will be telling the preferred mock. Don't start asking that ये coaching का mock नहीं, वो coaching का mock नहीं, guys. I'm telling you beforehand. Every mock is good. These are the preferred mock. First and the foremost is definitely lighting dreams, and then you have the legal age and career launcher. These are the preferred mock only. You can give the mock of any coaching. Don't ask me now that ये mock देना है या ये mock नहीं देना है. Analysis, ये सारे में सबसे important part है analysis. Even if you are giving 150 mock, analysis नहीं हो रहा है, forget about getting or improving or score in the mock. Time management is very important for your mock. 2 घंटे में पेपर कंप्लीट होता है गाइस, मैंने खुद कंप्लीट किया है पेपर, and people are completing it and getting good score. So this is about your mock and the analysis. Moving to the next slide. It is a very interesting slide, guys. That is the other suggestions. सबसे पहला है फोन. आपका फोन, चलो पढ़ाई शुरू करते हैं. फोन नोटिफिकेशन, अभी हम जिंदा है. In this pandemic, definitely laptop and phone is very important for your preparation. But now, as I've told you, अब ये जो 4 महीना है, it is very critical, guys. तो थोड़ा सा फोन से दूरी करना होगा आपको, थोड़ा सा फोन पे कम टाइम देना होगा. सोशल मीडिया, चैटिंग विद फ्रेंड्स एंड वॉट एवर ऑल एक्स्ट्रा फ्रेंड्स. You can understand you are not a teenager now. So chatting with friends and all this thing, leave it apart from now, as of now. Confine yourself to the preparation. Give the maximum time that you can give for your preparation. रात में 1 बजे तक पढ़ना पड़ रहा है, not a big deal, guys. अगर मेरा बेसिक्स ठीक नहीं है, मेरे को 30 जनवरी तक मेरा बेसिक्स ठीक करना है, तो डेफिनेटली आई हैव टू वर्क. डोंट थिंक कि बाकी बच्चे तो 10 घंटा में क्लैट प्रिपेयर करके क्लैट निकाल रहे हैं. एवरी फिंगर इज नॉट इक्वल ऑफ योर हैंड. Next is the postponement of the Clat and the music of Pankaj भैया. Don't think Clat postponed होगा. बच्चे के दिमाग में आना स्टार्ट हो गया है. I am getting message, we are getting message कि Clat postponed होगा. Don't dare to think that Clat मई में ही होगा. मई में कोई कोरोना नहीं रहने वाला है. AIMS, IIT, everyone has told that the corona will be going in the month of March. So make it a point that don't you dare to do all these things. Your mobile से थोड़ा दूर होके confine करना अपना preparation. Don't think about the postponement of the Clat. And then कोटा फैक्ट्री एक लाइन है कि सबसे पहले तो ये वर्ड जो है कि क्लैट निकालना मेरा सपना है, उसे यूज करना आपको छोड़ना है. बिकॉज इसे यूज करने का मतलब ही है कि पहले ही आपने मान चुका है कि आपसे कुछ नहीं होने वाला है, और सपना है तो वो तो सिर्फ देखने की चीज है. क्लैट इज नॉट योर सपना गाइस, क्लैट इज योर एम. तो सपने देखे जाते हैं, एम अचीव किए जाते हैं. ऑलवेज रिमेंबर दिस. That's all for this session as of now. I will be taking it out after this. But make sure that this 4 month is very critical for your CLAT preparation. So give your best.